My YouTube channel, Medical Classes by Dr. Srinidhi Kumar. Please don't forget to subscribe my channel and also please give your valuable comments. So today we will discuss about one very important topic in the clinical practice, that is about the red cell indices. Red blood cell investigation. What are all the investigations which are related to RBC, red blood cell, and how it will going to help us in the clinical practice. So if you look into some of the investigations, the common investigations which are related to red blood cell RBC are: one is packed cell volume. Packed cell volume is also called as hematocrit value. Okay. Now another is red cell count, total red cell count, RBC count, total RBC count. So next comes hemoglobin concentration. What is the percentage of hemoglobin? Hemoglobin concentration. So next comes mean corpuscular volume. Mean corpuscular volume. Another one is mean corpuscular hemoglobin. Okay, mean corpuscular hemoglobin. Another one is mean corpuscular hemoglobin concentration, MCHC, mean corpuscular hemoglobin concentration. Similarly, another one is RDW. RDW means red cell distribution width. Red cell distribution width. So these are some of the important investigations that we will going to see today. And how it will going to help us? It will going to help us to identify whether the existing anemia, if at all it is there, whether it is a microcytic hypochromic, hyperchromic, or normochromic anemias. Microcytic hypochromic, microcytic hyperchromic, or microcytic normochromic. Similarly, whether it is macrocytic hypochromic, macrocytic hyperchromic, or macrocytic normochromic anemias. So that we'll see one by one. So we will not be hurrying here. We'll go by slow, very slow, so that the concept will be very, very clear. And every time when you look into this HB concentration or this particular investigation slip, so you will have a clear-cut idea of what actually you are looking and why you are actually looking at it. So first we will go with the first investigation, that is packed cell volume. Packed cell volume is called as PCV, or it is also called as hematocrit. It is also called as hematocrit. So how to understand this hematocrit now? So we'll go by basics. Let us take about 100 ml of the blood. Okay? अब शुरू से शुरू करेंगे. अभी आप ऐसा सोचो कि आपने 100 ml blood को ले लिया है. Normal healthy person. You have collected 100 ml of the blood from the normal healthy person. And now put it into a container. Put it into a container. Then add some anticoagulant so that there is no any clotting. Add some anticoagulant so that blood will not go into clot. Now this particular mixture has to be subjected to centrifugation. Centrifuge karo usko. So when you do the centrifuge, what happens is all the cells will come down to the bottom area of the flask or beaker, okay, or container, and plasma will collect in the upper part. Everybody knows. Okay, after centrifugation, the plasma will be get collected in the upper part, and all the cells which are present, so they will get collected in the bottom. Now, among the cells which are collected in the bottom, now we are taking the blood, no? Blood also contains the neutrophils, blood also contains lymphocytes, blood also contains so many other proteins, okay, blood also contains so much of eosinophils, etc. Okay, so now the portion which is collected in the bottom, जो बॉटम में जो कलेक्टेड पोर्शन है, मास है, उसका ऊपर वाला जो लेयर है, दैट इज कॉल्ड एज बफी लेयर. ओके, दैट इज कॉल्ड एज बफी लेयर. सो व्हाट इज दिस बफी लेयर? बफी लेयर इज नथिंग बट द सॉलिड कंटेंट विच इज प्रेजेंट इन दैट 100 ml ऑफ द ब्लड अदर देन आरबीसी. जो डब्ल्यूबीसी है, लिम्फोसाइट है, ये जो है ना, तो ये सब सबसे ऊपर कलेक्ट होगा, सबसे ऊपर कलेक्ट होगा, और उस लेयर को हम बोलते हैं बफी लेयर. हमें उसे डिस्कार्ड करना है. सो वी विल लीव इट. Now below the buffy layer, what is present? So that is called as RBC. I think it's very clear. So we have centrifuge. Centrifuge करने के बाद जो ऊपर का portion है, that is called as a plasma. Okay, and in the below portion, in the bottom portion, we have got a solid material collected. In the solid material also, uppermost layer is called as buffy layer. We have to discard it. वो बफी लेयर निकालने के बाद जो बचता है वहाँ पे, so that is called as pure RBCs. That means 100 ml of the RBC contain this much of 100 ml of the blood contains this much of RBCs. Plasma is collected in the upper part. Okay.
Now go further. Okay, now below this buffy layer, there is densely packed RBC cells. Okay, below this buffy layer, there is densely packed RBC cells, which are packed together. एकदम compact होके वहाँ पे वो बैठा है, and they are collected, and this is called as packed cell volume. This is called as packed cell volume. That means it is nothing but the amount of the RBCs present in the 100 ml of the blood. Okay, so amount of the RBCs present in the 100 ml of the blood, which is collected in the bottom of the container. Which is present in the bottom of the container. Superficial जो layer है, एक buffy layer होता है, उसको हटाना है. उसके बाद जो बचता है, that is only RBCs. And this volume of this particular RBC, which is occupying the bottommost area of the container, and that is called as कितना volume है वहाँ पे RBC का. So that is called as packed cell volume. The same is also called as hematocrit. Same is also called as hematocrit. Now take the example now. This PCV area occupies, suppose if I am taking 100 ml of the blood, okay, then after centrifugation, जो PCV जो नीचे बचता है, so that actually about 45% of the total volume of the 100 ml of the blood. If I take 100 in a normal person, I am talking, in a normal person, if I am taking a 100 ml of the blood, after centrifugation, the volume of the PCV which is present is almost about 45%. बाकी जो 65% है, so that is plasma and 55% है, that is plasma and other things. 45% will be collected in the bottommost area, and that is called as PCV. So now PCV is almost all 45% if you take 100 ml of the blood. Okay, so the total volume of the RBC occupied by the total volume of the RBC occupied is about 45% in the 100 ml of the blood. Okay, so total volume of the RBC कितना हुआ अभी 45% हो गया 100 ml blood में. And if you take it for 1 ml, suppose if convert the same for 1 ml, it is about 0.45 ml per 1 ml of the blood is the PCV. Okay, 45% किसके लिए 100 ml के लिए, 1 ml के लिए कितना होगा 0.45 ml per 1 ml of the blood is the PCV. So this is the volume occupied by the RBC when the RBC are packed or hematocrit value. So this is called as PCV or hematocrit value. So normal PCV value is somewhat about 0.45 ml per ml of the blood. Okay, if you take 100 ml of the blood, it is about 45%. 0.45 in case of 1 ml of the blood. Now you go further. What is that? Now we know that PCV is nothing but the collection of the RBC mass together, isn't it? PCV क्या है? कुछ नहीं है, RBC जो नीचे collect हुआ है एक साथ, इसी को हम PCV बोलते हैं. And normally we know that is 0.45 per 1 ml. Okay. Now that is 1 ml. There will be total 0.45 PCV is there. इसका मतलब है 1 ml अगर if you take 1 ml, ठीक है? So उसमें कितना PCV है 0.45 है. Now we have to calculate how many RBCs are there in 0.45 PCV. एक तो हो गया PCV, it's very clear. Now we go to the next point. What is the next point? Red cell count. Second investigation, that is red cell count. So what is this red cell count? हमें पता है कि 1 ml में जो है 0.45 PCV है. ये जो 0.45 PCV है, इसमें टोटली कितना RBC है, इसको हमें समझना है. अगर मैं लेता हूँ 100 ml में मुझे पता है कि 45% PCV है. ये जो 45% PCV आ गया, उसमें एक्चुअली काउंट किया तो कितना RBC है, that I have to understand. So this indicates the red cell count. Now, so how to calculate this red cell count? Very simple. We know that usually 1 ml of the blood contains about 5 million RBC. Okay, 1 ml blood में कितना RBC है? 5 millions of RBCs are there. 5 millions of RBC is there. So in 100 ml of the blood, okay, कुल मिला के हमने कितना लिया? 100 ml blood लिया था ना. 100 ml of the blood, तो PCV is 45%. That means total RBC जो है 100 ml blood में कितना है, वो 45% है, PCV है, नीचे कलेक्ट हुआ है.
और उसमें कितना आरबीसी है हमें देखना है, उसमें कितना आरबीसी है हमें देखना है. सो दैट इज इन 100 ml ऑफ द ब्लड द टोटल पीसीवी इज 45%, while RBC count is 10 into 5 million, 100 into, so कैसे कैलकुलेट करना है RBC काउंट को 100 into 5 million, because 1 ml is equal to 5 million. Okay, so 100 ml 100 into 5 million, so that becomes 500 millions. ये कितना हुआ? तो 100 ml of the blood contains about 500 millions of RBC. ओके, हमें देखना क्या है आरबीसी काउंट को. तो 100 ml में 500 मिलियंस है. ओके, सो दिस इज वेरी क्लियर. सो दिस इज कॉल्ड एज आरबीसी काउंट. दिस इज कॉल्ड एज आरबीसी सेल काउंट. सो इफ द 100 ml contains 5 millions, okay, then calculate 10 ml contains how many millions? 1 ml contains how many millions? That is 5 millions. Okay, if it is below than that, that is abnormal. If it is above than that, that is also abnormal, polycythemia. Okay, now, but यहाँ तक तो ठीक है. But now that there is a small twist here. What is that? Sometime PCV may be very low. Okay, PCV packed cell volume है, कितना होना चाहिए? 45% होना चाहिए. Sometime it may be very low. For example, 25% है. PCV जो है उस आदमी का 25% है. That is, red cell mass is reduced, and RBCs are smaller than the normal. Now this is the problem. I will say PCV is 25%. So according to definition, PCV is reduced. But अगर उस बच्चे में जो RBC है वो RBC माइक्रोसाइटिक है, उसका साइज ही स्मॉल है. If the RBC is microcytic, the size itself is small, then although it contains good amount of RBCs, रेड सेल का काउंट जो है वो 5 मिलियन के आसपास ही है 1 ml में, बट उसका साइज कम है, इसलिए उसका वॉल्यूम भी कम हो जाएगा और पीसीवी कम आ जाएगा. ओके, दैट मीन्स दैट पीसीवी मे बी शोइंग लोअर वैल्यू ऑल्दो चाइल्ड इज नॉर्मल इन केस ऑफ माइक्रोसाइटिक एनीमियास. Okay, in case of microcytic anemia. Similarly, opposite can also occur. Sometimes PCV is 50% or may PCV is 60%. ठीक है, 60% है. अगर 60% है बोल के मैं उसको नॉर्मल या बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ. The reason is the RBC which is present in that patient is macrocytic. RBC का साइज बहुत ज़्यादा है. So now what happens? Although PCV is raised about 65% in 100 ml of the blood, as RBC size itself is very big, it occupies more volume. तो RBC 5 million होना चाहिए, RBC तो उसको 2 million ही है, but the size of the RBC is very big, it is macrocytic. Now still it shows a high PCV value. Got the point? So PCV may be changed in case of microcytic anemias, and PCV may be changed in case of macrocytic anemias. Okay, so this is point number 1. Now I think this is the same repetition I am telling. So यहाँ पे क्या हो गया? Just knowing the PCV is not enough, है ना? PCV just understanding the PCV or identifying the PCV is not enough to do any diagnosis, because PCV may be going to vary in microcytic and macrocytic anemias. So therefore we have to also know the actual RBC count, है ना? एक्चुअल RBC काउंट कम हो सकता है. किसमें? मैक्रोसाइटिक में, क्योंकि कम RBC बहुत ज़्यादा वॉल्यूम को ले लेता है. ठीक है, और अगर RBC का साइज छोटा है तो PCV और कम हो जाएगा. तो सिर्फ PCV देखने से कोई फ़ायदा नहीं है. देखना क्या चाहिए? RBC का काउंट कितना है वो इम्पोर्टेंट है. RBC का काउंट सिर्फ 20 है. ठीक है, 100 ml में सिर्फ 20 मिलियन है RBC का काउंट. फिर भी जो है वो आपको PCV ज़्यादा दिखाएगा क्योंकि उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा. RBC का साइज बहुत कम है, माइक्रोसाइटिक है, फिर भी आपका PCV लो दिखाएगा क्योंकि RBC का काउंट ज़्यादा. सपोज RBC का काउंट नॉर्मल है, फिर भी वो PCV दिखाएगा क्योंकि RBC का
साइज छोटा है, माइक्रोसाइटिक है. सो इसलिए सिर्फ ओनली बाय लुकिंग एट पीसीवी यू कैनॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग अबाउट द रेड सेल इंडिसेस. सो वी शुड ऑल्सो नो द रेड सेल काउंट. वी शुड ऑल्सो नो द रेड सेल काउंट. नाउ समटाइम द काउंट इज इक्वल बट द आरबीसी साइज इज लार्जर. दिस वी हैव डिस्क्राइब्ड. नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट. सो एक तो पीसीवी देखना है, दूसरा रेड सेल काउंट देखना है. रेड सेल काउंट देखना है कैसा है? वी नो दैट 1 ml कंटेन्स 5 millions. Okay, that's the red cell count. 1 ml of the blood contains 5 millions of RBC. Red cell count हो गया. Now we come to know the hemoglobin concentration, HB percentage, जो हम routinely करते हैं, HB percentage. So what in by HB? Where HB is present? HB is present inside the RBCs. We know that 1 ml contains about 5 millions of RBCs. अब वो जो RBC है उसके अंदर कितना हीमोग्लोबिन है ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. Okay, so now we have calculated the total RBC mass. हो गया. इसको हम बोलेंगे PCV और hematocrit value. Then we have seen the number of RBCs. वो भी हो गया 5 millions. Now we have to see hemoglobin percentage which is present inside the single RBC. है ना? अब क्या है कि inside this RBC कितना hemoglobin है दिस ऑल्सो वी हैव टू फाइंड. बिकॉज अल्टीमेटली नंबर से क्या होने वाला है? आरबीसी काउंट 500 है, सॉरी 5 मिलियन है, 5 मिलियन है, बट उसके अंदर हीमोग्लोबिन कम है तो क्या फायदा है? ठीक है, तो पीसीवी बहुत ज्यादा है बट वो मैक्रोसाइटिक है, क्या फायदा है? सो देयरफॉर व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज नंबर कुछ भी हो उसके अंदर जो है एचबी का कॉन्सेंट्रेशन कितना है दैट वी हैव टू understand. So this is called as hemoglobin concentration. This is called as hemoglobin concentration. Now hemoglobin is present inside the RBC. We know that. Okay. So जब RBC is usually having biconcave shape. So in the biconcave shape, now HB is present in two important areas. One, HB is present in the central portion and HB is also present in the peripheral portion of the RBC. As we यूजुअली थिंक हीमोग्लोबिन जो है पूरा आरबीसी के अंदर भरा हुआ नहीं है. हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर साइड्स में ज़्यादा है, पेरिफेरी में, और सेंट्रल में थोड़ा बहुत है बट बहुत थिन है. थिक कहाँ पे है? साइड में है. इसलिए हमें माइक्रोस्कोप में आरबीसी साइड पोर्शन में ज़्यादा पिंक दिखता है और बीच में पेल दिखता है. बिकॉज इन द सेंटर अमाउंट ऑफ द हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इज लेस. In the periphery, amount of the hemoglobin present is more. And it is also wrong that whole RBC is filled with hemoglobin. If the whole RBC is filled with the hemoglobin, then the hemoglobin shape will be globular. But we know that the shape of the hemoglobin is a biconcave because central portion and peripheral portion contains the hemoglobin. Now, if there is total inside the RBC, only 1/3 portion of the hemoglobin only 1/3 portion of the RBC contains hemoglobin. Okay, so it's not that whole RBC contains hemoglobin and only 1/3 portion of the RBC contains hemoglobin. Rest of the 2/3 portion is empty, and this emptiness is required when the RBC is moving. If this emptiness is not there, then RBC cannot move and maintain the biconcave shape. So now things are very clear. In the single RBC, only 1/3 portion of the space of the RBC is occupied by the hemoglobin. Rest of the portion is free. Okay, rest of the portion is free. Now look into the next part. Now, that is the total PCV red cell mass we got. Total PCV, out of the total PCV, only 1/3 of it will have the hemoglobin, isn't it? So I have got the PCV. What is PCV? PCV is something 45%. All the PCV is nothing but red cell mass together. But although it is 45%, how much of hemoglobin is present? Hemoglobin is present in only 1/3 portion of this 45%. Okay, hemoglobin is present only in 1/3 portion of this 45%. So hemoglobin percentage is 45 into 1/3. Okay, तो total hemoglobin percentage अगर मैं 100 ml ब्लड लिया और उसका जो PCV है 45%, उसमें एक्चुअली हीमोग्लोबिन कितना है? 1/3 है ना.
एक में 1/3 है, तो if you take 100 ml of the blood, the total 500 millions of RBCs are there 100 ml blood में, and out of this 500 million RBCs only about 15% of hemoglobin is present. 15%, this is for the normal person. Okay, I think you got it. So hemoglobin percentage is 45 into 1/3, that is about 15%. That is 15 gram of hemoglobin is present in 100 ml of the blood. Okay, because 45% PCV किसका है, 100 ml का है, तो 15% मतलब 15 grams of hemoglobin is present in about 100 ml of the blood. Okay, or 15 gram per deciliter, 150 grams in 1 liter of the blood. 1 लीटर में कितना है, about 150 grams. Okay, because 100 ml 15, so 1000 ml में हो गया 150 grams in 1 liter of the blood. I think this is clear. So this is how we have to understand the hemoglobin percentage. First we understood PCV, then we understood the red cell count, and then we understood the hemoglobin concentration. Now, suppose if there is two persons with the same PCV, दो लोग हैं, दोनों का PCV is same, and they're also having same RBC count, then the HB percentage can differ, as there may be feeling less than 1/3 in some RBCs and more than 1/3 in other RBCs. Okay, now see, two person A and person B is there, and both are having same PCV and both are having same RBC count. Now, in a normal person, the hemoglobin which covers inside the RBC is 1/3 portion, but it may differ in person to person. कुछ लोगों में 1/3 से ज़्यादा भी हो सकता है, और कुछ लोगों में 1/3 से कम जगह में भी हीमोग्लोबिन रह सकता है. सो जहाँ पे 1/3 से ज़्यादा है उसका टोटल हीमोग्लोबिन परसेंटेज विल बी मोर. जहाँ पे 1/3 से कम जगह में वो है, सो इस टोटल परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन विल बी लेस देन 1/3. सो ओके, सो PCV और RBC काउंट दोनों का एक है, बट PCV का मतलब टोटल रेड सेल मास है, RBC का मतलब RBC का काउंट है, बट उसके अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो दोनों में एक होने का जरूरत नहीं है, वो अलग अलग हो सकता है. So this is how we have derived these three important things. Okay, so one is red cell count, PCV, and hemoglobin concentration. So once these three are get derived, जब हमें ये तीन वैल्यू मिल गया, so what is that? PCV is 45%. We know that. Red cell count is 5 millions, and hemoglobin percentage is 1/3. That is almost 15 grams in 100 ml of the blood. 15 grams in the 100 ml of the blood. So we got these three normal values. Now once you know these normal values, then now you can go further. How? Okay. Now we have to calculate mean corpuscular volume. Now try to understand very carefully. Mean corpuscular volume. Corpuscle means one cell, है ना? Red blood corpuscle हम बोलते हैं. So corpuscle. So mean मतलब average है, हमें पता है. Volume. What is this? Now, just try to understand. This is the volume occupied by the single RBC. This is the volume which is occupied by the single RBC in the given unit of the blood. ठीक है, हमने वहां पे PCV में देखा. PCV में हमने देखा क्या है, पूरा का पूरा RBC कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है वो हमने देखा. बट मीन कार्पसल बता सिंगल सेल, एक सेल, हाँ वो 45% वहां पे जो पैक्ड सेल आ गया वो पूरा आरबीसी मिला के, बट एक सेल ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, एक सेल ने. सो दैट टेल्स मीन कार्पसुलर वॉल्यूम. Okay, so this is the volume occupied by the single RBC in the given unit of the blood. The volume occupied by the RBC obviously it depends on the size, है ना. तो जो वॉल्यूम है, अगर आरबीसी का साइज बड़ा है तो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, आरबीसी का साइज छोटा है तो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा. ओके, एंड वाइस वर्सा. सो नाउ हियर कम्स MCV. Importance of MCV.
Packed cell volume will not give the volume of individual RBCs. It gives the volume of the total, all the RBCs. But whereas mean corpuscular volume gives the volume of the single RBC. Single RBC. Okay. Now, therefore, this is quite useful for us. Why? Because the size of the RBC may going to change either into microcytic or into macrocytic. Okay. If the macrocytes are there, then MCV will increase. Mean corpuscular volume increase क्योंकि वो ज़्यादा volume लेता है. If it is microcytic, MCV will going to decrease. Okay. Now, take in a normal person. In a normal healthy person, a normal RBC, मतलब normocytic, जो normocytic RBC है, that occupy about 90 femtoliter. Femtoliter. कितना volume? Femtoliter. Femtoliter उसका unit है. ठीक है, femtoliter. One femtoliter is a very smaller than the micro. Micro से भी कम है. ये जो volume है, micro volume से भी कम है, वो femto volume है. Femtoliter. So in a normal person, when he is having normocytic RBC, the volume occupied by one RBC is a 90 femtoliter. Okay. The MCV can be calculated by the formula. तो इस formula को हम इस MCV को कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेरी सिंपल. हमें पता है कि PCV कितना है. ओके. द MCV कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला टोटल वॉल्यूम कैलकुलेटेड बाय RBC. टोटल वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल अमाउंट ऑफ द RBC डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ RBC. ओके. Total amount of the RBC. Total amount of RBC is nothing but PCV. ठीक है. Then total number of the RBC. Total number of the RBC हमें पता है 5 million. Now total in a normal person total PCV कितना है? 0.45 है. 45% 100 ml में 1 ml में 0.45 है. ओके. 1 ml में जो RBC काउंट है 5 million है. So PCV divided by RBC count, if you divide this, it comes almost all around 90 into 10 to the power minus 15 liter. Okay, that is 90 femtoliter. 90 femtoliter is the normal MCV. Normal MCV. If MCV is less than 90, usually जो हमें मिलता है उसमें वो रेंज दे देते हैं. 90 नहीं देते, वो 87 to 92 ऐसा कुछ देते हैं. Okay, normal is 90, and if MCV is 90, it suggests that RBCs are normocytic. If MCV is more than 90, somewhere around 100, 97, 98, 100, then the RBCs are more and more macrocytic. If it is less than 90, somewhere around 50, 60, 70, etc., then they are largely microcytic. Okay, this is a very simple investigation. MCV कितना simple investigation है, but it helps a lot to identify whether the RBCs are microcytic or macrocytic. Microcytic RBCs are seen in iron deficiency anemia. Microcytic RBCs are seen in thalassemia. Macrocytic RBCs are seen in case of megaloblastic anemia or folic acid deficiency and B12 deficiency, etc. So this is quite useful. So हमने क्या देखा अभी? MCV को देख लिया. MCV को हमने कैलकुलेट कैसे किया? जस्ट PCV डिवाइडेड बाय रेड सेल काउंट, दैट गिव्स द MCV. दैट्स ऑल. MCV मीन्स वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द सिंगल RBC. नाउ गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन MCH. मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन मतलब हमने वहां पे क्या देखा? PCV देखा. After looking at PCV, we try to find out the RBC count, and after finding the RBC count, we try to find out the hemoglobin concentration present in the each and every RBC. Here also, first we understood the single RBC volume. Single RBC कितना RBC को वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है वो हमने देख लिया, जिसका नाम है MCV. नाउ सिंगल RBC के अंदर कितना हीमोग्लोबिन है वो देखना है, क्योंकि अलग अलग इसमें अलग अलग हीमोग्लोबिन अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन होगा. सो इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ द हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन इंडिविजुअल RBC, देन इट इज कॉल्ड एज MCH, मीन कार्पस्कुलर
hemoglobin. So how to calculate this? Very simple. Now MCH refers to the amount of hemoglobin present in every RBC. Okay, so this is calculated by a very simple formula. MCH is equal to total amount of hemoglobin in the given volume. Total amount of the hemoglobin in the given volume divided by red cell count. Okay, red cell count. Now total amount of the hemoglobin in the given volume, suppose I am talking about 100 ml of the blood, उसमें कितना है total amount of hemoglobin हमें already मिल चुका है, that is about 15 grams, है ना, 15 grams. So 15 grams divided by total number of RBC present. Total number of RBC present 5 millions. Total number of RBC in a normal person is 5 million. So this gives red cell count divided by total number of RBC, that gives about 30 picograms. ये आपका फेम्टोग्राम से भी छोटा यूनिट है, 30 picograms. Okay, so now the normal MCH is 30. हमें क्या मिला? नॉर्मली जो है हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन है एक, है ना, एक जो आरबीसी के अंदर जितना हीमोग्लोबिन रहता है, दैट इज अबाउट 30. Okay, that is almost all equal, isn't it? What we say, 1/3 portion of the RBC contains, 1/3 portion of the RBC contains हीमोग्लोबिन, रेस्ट ऑफ द पोर्शन इज फ्री. सो आरबीसी को अगर आप 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 30 30 90, तो ऑलमोस्ट 100 के आसपास आ गया, थोड़ा 31 इधर उधर हो सकता है. सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस द नॉर्मल अमाउंट ऑफ द MCH इज नथिंग बट 30 picograms. सो इफ आपका जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, इफ MCH इज लेस देन 30, सो व्हाट इट सजेस्ट? टोटल अमाउंट ऑफ द हीमोग्लोबिन इज लेस. What may be the cause? Maybe iron deficiency anemia, maybe some other problems. Okay, even in thalassemia also. Okay, and if total amount of the hemoglobin is more than 30, that means that there is overcrowding of hemoglobin inside. Very simple. So MCH gives a lot of information. Okay, so MCH अगर कम हो गया तो definitely it is pointing towards iron deficiency anemia. If MCH is more, there may be some other problems like thalassemia, spirocytic anemia. तो वहाँ पे सब क्या होता है कि आयन का स्टोर होता है, ठीक है, that may be the case. Okay, so it's okay. Now MCH, MCV is okay, MCH okay. Now come to the next part. What is that? Mean corpuscular hemoglobin concentration. अच्छा, what is that? MCV तो हो गया सिंगल आरबीसी का टोटल वॉल्यूम, सिंगल आरबीसी का वॉल्यूम है. MCV हो गया. MCH क्या है? सिंगल आरबीसी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन है, हमने देख लिया 30 है. ये क्या बोल रहा है? मीन कार्पसुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन. मीन कार्पसुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, दैट मीन्स दिस रेफर्स टू द डिग्री ऑफ हीमोग्लोबिनाइजेशन इन द सिंगल आरबीसी. तो वहां पे हमने क्या देखा? अमाउंट देखा, ठीक है. अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं? कॉन्सेंट्रेशन देख रहे हैं. कॉन्सेंट्रेशन देख रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन देख रहे हैं. सो व्हाट इज दैट? दिस रेफर्स टू द डिग्री ऑफ हीमोग्लोबिनाइजेशन इन द सिंगल आरबीसी. नाउ यूजुअली द हीमोग्लोबिन फिल्स ओनली 1/3 portion of the RBCs. This can be calculated by the total hemoglobin divided by the total volume of the RBCs. वो हमने लास्ट स्लाइड में देखा, दैट इज अराउंड 30 और 33%. प्रैक्टिकल पर्पज के लिए हम 30 मानते हैं उसको. ओके, सो इन अ नॉर्मल पर्सन MCV इज 90, MCH इज 30 और 33. ओके, MCH is 30 and MCH is 33%. Now we know that this can be calculated by the total hemoglobin divided by the total volume of the RBC. What is the total hemoglobin? Total hemoglobin is 15%. What is the total volume of the RBC? Total volume of the RBC is PCV 0.45. That gives the degree of hemoglobinization. कितना hemoglobinization हुआ है in general, ठीक है. मीन कार्पसुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है. टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एक इसमें कितना है? सो दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ द हीमोग्लोबिन डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ द आरबीसी. दैट कम्स अंडर 33%. नाउ थिंग्स आर वेरी क्लियर. MCV इज 90, MCV, MCH is 30,
and MCHC is 33%. MCHC is 33%. Now, look at this. Now, the above derived standards, जो अब तक हमने derived, some other facts should be also identified. So, in a normal person, MCV is 90 FL. Okay, MCH is 30 and MCHC is 33%. The red cells can be sometime underfilled or sometime overfilled with the hemoglobin. Normally, it is filled 1/3 of its capacity, that is 33%. If it is 100%, अगर RBC का अंदर 100% hemoglobin है, then RBC will be swollen and it is become globular instead of biconcave shape, and that leads to abnormal RBC size. Abnormal RBC size. But normally its volume of the RBC is more and the amount filled of the HB is less. Hence it maintains the biconcave shape. Okay, so this we have described. Now we come to the next part. When it is filled up to 1/3%, then we can see in the microscope, we can see the distribution is more at the periphery. This also I have told. जो 1/3 में जो है पेरिफेरी में ज़्यादा रहता है और सेंट्रल में कम रहता है. सो देयरफॉर सेंट्रल पोर्शन इन द माइक्रोस्कोप इट लुक्स पेल एंड पेरिफेरल पोर्शन लुक्स पिंकिश. ओके, सो नॉर्मली द सेंट्रल पेलनेस इज ड्यू टू द लेस एचबी. सेंट्रल पोर्शन में एचबी जो है डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत थिन है, सो देयरफॉर वहाँ पे पेलनेस है. नाउ दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज, इफ द सेंट्रल पेलनेस इज देयर, पेरिफेरल रेडनेस और पिंकनेस इज देयर, देन इट इज कॉल्ड एज नॉर्मोक्रोमिक. नॉर्मोक्रोमिक, कलर सही है, क्रोम मतलब कलर, हीमोग्लोबिन सही है. सो इन ए नॉर्मल पर्सन MCV is 90, MCH is 30 and MCHC is 33%. Now instead सेंट्रल पेलनेस नहीं है, सेंट्रल भी पिंकनेस है. इसका मतलब क्या है? हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है. इंस्टेड सेंट्रल पेलनेस है और पेरिफेरल पोर्शन में भी सेंट्रल पेलनेस है. इसका मतलब क्या है? हीमोग्लोबिन का परसेंटेज बहुत कम है, आयरन डेफिशिएंसी है. ओके, सो नाउ वी लुक इनटू हाइपोक्रोमिक. सो दिस आई टोल्ड ऑलरेडी. सो दिस कैन बी रिटन एज हाइपोक्रोमिक में पिक्चर कैसा आएगा? हाइपोक्रोमिक में MCV इज 90%, क्योंकि हाइपोक्रोमिक को कलर कम है, हीमोग्लोबिन कम है, तो MCV में कोई चेंज होगा क्या? नहीं, वो तो टोटल वॉल्यूम है. MCV इज 90%. MCH इज हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन है ना. हीमोग्लोबिन मीन कार्पेथल हीमोग्लोबिन, सॉरी मीन कार्पेथल हीमोग्लोबिन, टोटल हीमोग्लोबिन कितना है? दैट इज 20. कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम है. ओके, कम टू MCHC. MCHC 33% होना चाहिए और वो आ गया 22%. दिस इज इन अ हाइपोक्रोमिक कंडीशन. दैट मीन्स व्हेन कलर इज लेस means hemoglobin is less. When hemoglobin is less means mostly related to iron, so maybe nutritional anemias. Okay, so this is the presentation. Now go further in hyperchromic. When you are talking about hyperchromic, what is the presentation? MCV is 90%. Okay, MCV से कोई लेना देना हमें. MCH हीमोग्लोबिन 30% होना चाहिए, उसके बदले में 55% है, ज़्यादा है. और MCHC वो भी ज़्यादा हो जाएगा, 33% के बदले में वो 50% है. So when this type of presentation is there in the investigation, so that suggests it is a hyperchromic anemias. Hyperchromic anemias. Yes. So this is about the color. So ये जो हाइपोक्रोमिक और हाइपरक्रोमिक, ये दोनों में आपने क्या देखा? इसमें आपका PCV नॉर्मल था और MCV भी नॉर्मल है. PCV टोटल था, MCV सिंगल था. वो दोनों नॉर्मल है क्योंकि उसका साइज से कुछ, उसका नंबर से कुछ लेना देना नहीं था, बट हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन अंदर डिस्टर्ब था. सो दैट मीन्स रेडी आगे बढ़ते हैं. दैट मीन्स अगर MCH और MCHC ये दोनों अगर बढ़ गया तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है कि हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया. ये दोनों कम हो गया तो हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया. So hemoglobin is the one which gives the color, chrome. So that leads to either hypochromia or hyperchromia. Now how to identify whether it's a microcytic or whether it is macrocytic? So इसको कैसे करना है? Microcytic या macrocytic?
PCV is the total volume of the RBCs. MCV is a single RBC size. Okay. So what is norm now? एक गिवन आरबीसी है, ये माइक्रोसाइटिक है, मैक्रोसाइटिक है, नॉर्मोसाइटिक है, साइज छोटा साइज है, बड़ा साइज है, नॉर्मल साइज है, ये देखना है हमें. सो दिस विल डन बाय एमसीवी. अब तक जब कलर देख रहे थे हम हाइपोक्रोमिक हाइपरक्रोमिक, वहाँ पे एमसीवी का कोई मतलब नहीं था, वो तो नॉर्मली रहता था. बट नाउ इफ इट इज माइक्रोसाइटिक, okay, if it is microcytic, MCV will going to decrease. If it is macrocytic, MCV will going to increase. Just like your PCV. PCV में जनरलाइज था, इसलिए पता नहीं चलता था. बट यहाँ पे हम सिंगल देख रहे हैं ना, MCV मीन्स वॉल्यूम occupied by the single RBCs. So now if the MCV is 60, MCV कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए. If the MCV is 60, MCH is 20 and MCHC is 33%. हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिनाइजेशन 33% है, वो तो नॉर्मल है. और टोटल हीमोग्लोबिन वो थोड़ा कम है, 20 है. और MCV वो भी कम है. सो इसका मतलब क्या है कि MCV 60 है, 90 से 60 में आ गया. इसका मतलब है टोटल RBC का जो साइज कम है, इसलिए उसका वॉल्यूम कम है. RBC का साइज कम है, इसलिए उसका वॉल्यूम कम है, MCV कम है. सो दिस इज नथिंग बट माइक्रोसाइटिक RBC. This is nothing but microcytic RBC. Now, if MCV is 60, MCH is 15, and MCH is 25%. What is this condition now? See, MCV 60, definitely a microcytic है. MCH 15, MCH होना चाहिए 30, but वो 15 है. Hemoglobin concentration कम है. And MCHC वो भी कम है, hemoglobinization भी कम है, 25%. Now what is this? This is microcytic एंड हाइपोक्रोमिक RBCs, क्योंकि इसमें कलर भी कम हुआ है, हीमोग्लोबिन भी कम है, एंड ऑल्सो द वॉल्यूम ऑफ द सिंगल RBC इज ऑल्सो लेस. सो दिस इज माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक RBC. इफ MCV इज 60 एंड MCH इज 30 एंड MCHC इज 55%, MCV इज नॉर्मल 90 है, बट वो 60 है, सो दैट मीन्स माइक्रोसाइटिक. MCH इज 30, हाँ MCH तो नॉर्मल है, बट MCHC टोटल हीमोग्लोबिनाइजेशन वो कितना है? 55% है, वो तो बहुत बढ़ गया है. सो दिस सजेस्ट दैट इट इज MCV कम है, देयरफॉर इट इज माइक्रोसाइटिक. बट MCHC बड़ा है, देयरफॉर इट इज हाइपरक्रोमिक. सो दिस इज माइक्रोसाइटिक हाइपरक्रोमिक RBC. Okay, so last one is red cell distribution width. This helps to indicate the variation in the size of the red blood cells. This helps to identify the percentage of microcyte, normocyte and macrocytes present in the circulating blood. Usually this is seen in combination of megaloblastic and iron deficiency anemia, and then the RDW is high. That we will see in the next class. Now this is very simple. PCV, red cell count, hemoglobin percentage. On the other side, MCV, then the MCH and MCHC. So this helps to identify whether the condition is microcytic hypochromic anemia, whether it is a microcytic normochromic anemia, microcytic hyperchromic anemia, or macrocytic hypochromic, macrocytic hyperchromic, or macrocytic normochromic anemia, or combination of all. So this much of information you can get just by HB concentration, RBC count, PCV, MCV, MCH and MCHC. Okay, so this we have to understand. This is all for today. Thank you very much.